गवर्नमेंट हैज पुट अ कैप ऑन एवरीथिंग, मतलब इस ट्रीटमेंट का प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं समटाइम्स आई गेट वरीड वेयर सम गवर्नमेंट from the government say that deficits are under control and we are doing capex and all that, and I have grown up in a reasonably prosperous village, 6 hours and then 2 hours again at night. हम लोग क्रिकेट मैच कभी फुल देख ही नहीं पाते थे। पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, they are not paying their electricity bills, right? Of course नहीं, तो there is a danger that you have, like China, you have amazing infrastructure but productivity growth will stop and you are sitting with lot of debt and you don't know what to do now. पहले आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एनओसी या कुछ लेके आना पड़ेगा, तब तक what will happen to the patient, God alone knows. हाय जागरूक जनता, ये हमारा छोटा सा अटेम्प्ट है आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाने का। इस साल सरकार ने 45 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया था। 45 लाख करोड़ का मतलब इतना पैसा सरकार खर्च करेगी। आप कैसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो कि ये पैसा सरकार सही जगहों पर खर्च करती है या गलत जगह पर? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आने वाले 5-10 सालों में इंडिया को ग्रोथ मिलेगी और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा प्योरली बस बर्न होता है? बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 13.6 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। ये पैसा कहाँ लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स, पावर, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब के निर्माण से हमें क्या फायदा? आप सोचिए कोई टनल बन जाए एंड बिकॉज ऑफ दैट टनल अर्लियर इट यूज्ड टू टेक 4 hours to cross reach city A to city B. Suppose now it takes half an hour, right, from 4 hours. पहले देखिए आपको कोई रॉ मटेरियल अगर आपको स्टोर करना है, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड हैव बीन मोर बिकॉज बहुत टाइम लगेगा आते आते। स्टॉक आउट दुकान है, अभी तो आपको पता है कि आधा घंटे में आएगा माल, तो यू कैन यू नीड योर इन्वेस्टमेंट ऑन वर्किंग कैपिटल गोज डाउन। दैट मींस कम पैसे लगा के आप ज्यादा कमा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली एनेबल्स बिजनेसेस टू ग्रो, बट हमारी सरकार के खर्चे इनकम से ज्यादा हैं। दैट मींस सरकार लॉस में चलती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स जरूरी है क्योंकि उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, बट उसको बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे पास है नहीं। तो कहाँ से आएगा ये पैसा? या तो आपके टैक्सेस बढ़ा कर आएगा या उधारी लेकर आएगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि हमारी सरकार उधार के पैसे से क्या करती है उससे हमें फर्क पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स आपने इतना प्यार दिया था तो हम वापस ले आए प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्री को, हु इज अ टेन्योर्ड प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट इंडियाज बेस्ट बिजनेस स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और साथ ही साथ इंडिया की लार्जेस्ट एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर तांत्री अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स को एनालाइज करके ये बताते हैं कि इनका ट्रू इम्पैक्ट कितना है, और इस पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि कौन से एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट अगर पैसा स्पेंड करती है तो उससे ग्रोथ आती है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को शायद आप लोगों को खुश करने के लिए करनी तो पड़ती हैं बट उससे ग्रोथ नहीं आती है। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, दुनिया में किसी सरकार के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, और सरकार का पैसा यानी हमारा पैसा, और हम यही चाहेंगे कि वो पैसा सही जगह लगाया जाए। बट अगर हमें सही और गलत की पहचान नहीं होगी तो हम सरकार से हमारा हक कभी नहीं मांग पाएंगे। कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, भाषा काफी बेसिक रखी है ताकि आपको समझ में आए। ऑडियो में अगर इशू लगे तो प्लीज सबटाइटल ऑन कर लेना। दिस इज मनी माइंडेड मंदीप, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स लिसन टू द कॉन्वर्सेशन नाउ। Let's take a very simple case: a farmer growing rice, right? Paddy. Somebody is growing 100 kgs of paddy this year. How do you get it to 120 kgs, 150 kgs, or more? There are only two ways in the long run. One, आपको invest करना पड़ेगा, which is tiller खरीदो, tractor खरीदो, get equipment which are more efficient, or increase your skill, which is called human capital. There are only two ways in the long run: efficiency, yeah, investment. There is no other way of growing, or otherwise you should be lucky. You should find oil or gold in your paddy field. That's not what happens, right? Otherwise, either skill or investment. Yeah. Now the problem is there are some investments like infrastructure investment where private sector does not come in as much. The gestation period is long. Matlab, it will take 20 years to do let's say you build a dam. Imagine private companies trying to build a dam on their own. There are rehabilitation issues. There are environmental issues. It will take 25 साल. So it's very hard for private sector to invest in this long-term infrastructure project. That is where government comes in. Yeah. So जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपका जो future growth है, देश का future growth depends on two things. एक, आपका productivity बढ़ना चाहिए या आपका investment बढ़ना चाहिए. नहीं तो growth नहीं होगा. आप किसी का भी, आप कोई योर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ,
your business growth, country's growth, everything. There are only two reasons. Either you invest, and because of that additional investment, you're able to produce more, or with the same investment, you become more efficient. Now, जैसे मैंने राइट कहा कि अगर India has to grow, there needs to be investment, and investment can come from private sector, can come from government. Now, there are certain investments only government can make. As I said, private sector doesn't invest in infrastructure. So that is why capex is important. From a growth point of view, अगर ये नहीं होता, see, आप सोचिए कोई टनल बन जाए, and because of that tunnel, earlier it used to take 4 hours to cross, reach city A to city B. Suppose now it takes half an hour, right, from या 4 hours, and your business involved traveling from A to B. एक हाँ एक दिन में आप दो एक ही बार जा सकते थे, अभी 4 बार जा सकते हैं, right? You can do more business. You can, राइट it, and you can source. पहले देखिए, आपको कोई रॉ मटेरियल अगर आपको स्टोर करना है, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड हैव बीन मोर, बिकॉज बहुत टाइम लगेगा आते आते, स्टॉक आउट हो सकता था, कोई दुकान है। अभी तो आपको पता है कि आधा घंटे में आएगा माल। तो यू कैन, यू नीड योर इन्वेस्टमेंट ऑन वर्किंग कैपिटल गोज डाउन, दैट मीन्स कम पैसे लगा के आप ज्यादा कमा सकते हो। सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ ग्रोथ इज व्हाट, एवरी बिजनेस प्रोडक्शन इंक्रीजिंग इज, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प, इसीलिए कैपेक्स चाहिए। गवर्नमेंट का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है, जिसमें से 10 लाख करोड़ आर एलोकेटेड टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस। What is capital expenditure? Because if a major part of budget is allocated towards capital expenditure, I think we must understand what is it and why is it different from revenue expenditure. So let me answer your question in two ways. One is the accounting definition of capital expenditure, which is what is followed in the budget. So anything that goes for asset creation, any investment, any spending which is aimed at asset creation is considered a capital expenditure. जैसे रोड पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आप, या पोर्ट, एयरपोर्ट, जो भी हो, ब्रिजेस और एनीथिंग दैट यू कंस्ट्रक्ट, tunnels and so on, that is considered as power generation capacity and so on. जहाँ पे कोई एसेट क्रिएट होता है, दैट इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट इज लॉन्ग लास्टिंग, नॉट जस्ट इन दैट ईयर. अगर आप कुछ खर्च हो तो उसका बेनिफिट विल बी फॉर मोर नंबर ऑफ ईयर्स देन वन, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लाइक पेमेंट ऑफ सैलरी, उसका जो भी बेनिफिट है उसी साल खत्म हो जाता है. सब्सिडी एंड एंड थिंग्स लाइक दैट, इंटरेस्ट पेमेंट, जो आपने जो बोला 45 लाख करोड़, उसमें 10 लाख करोड़ goes for interest payments in India. So that's the biggest revenue expenditure. So these are things that is considered revenue from an accounting point of view. But from an economic point of view, it is not just physical assets. Consider things like health, expenditure on health, and on education. Now, what accounting, budget accounting does, these are all treated as revenue expenditure. Ayushman Bharat, for instance, is treated as revenue. In my view, it's a capital expenditure, because if health of people improves, if their students study more, learn more, that is, the benefits will be long lasting. ऐसा नहीं कि 21 साल में सारा benefit उसका खत्म हो जाएगा. People become healthy, people become more skilled and educated. So economic definition should also include health and education along with physical infrastructure. But accounting में ऐसा नहीं करते. They consider only जो asset creation पे जो खर्च होता है, उसको capital expenditure कहते हैं. जीडीपी और केपेक्स को साथ में क्यों देखते हैं हम? ऐसा ग्राफ पे क्यों कंपेयर करते हैं कि केपेक्स हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है? व्हाई डज केपेक्स मैटर सो मच? GDP का percentage क्यों? Just to understand whether it is high or low, right? GDP क्या है? GDP is country's income. So what proportion of your income you are investing? Otherwise, आप सोचिए, somebody who is very rich, saving 10,000 rupees, and a poor person saving 10,000 rupees are different, right? So if I just tell you 10,000 rupees, उसका कोई मतलब नहीं होगा. मतलब for a poor person, 10,000 could be 50% of their income. For a rich person, 10,000 could be 0.0%, 0.01% of their income. So it won't give you a sense of how much we are investing. To give that, we normalize, आप इसको एक denominator GDP, which is country's income. अभी देखिए, and for comparison also, मैं आपको देखिए, आप 2013 का 2002-3 का बजट लीजिए. 2003-4 में our capex was 1,19,000 crore. 2003-4 ओके. ये है 10. Now अगर आप ऐसे देखोगे, it will look like it's increased crazily, right? 1 lakh, वाजपेयी जी का लास्ट ईयर था, it was 1,19,000 crore.
and abhi 10 lakh crore, as you said, it will look as if it's gone up 10 times. No, prices have increased and our income has increased. So as a proportion of income क्या है, तब क्या था, अब क्या था, इसीलिए. So if you see that time, our GDP was, if I remember correctly, 27 lakh crore. अभी हमारा Okay. GDP है 300 lakh crore. Imagine somebody earning 27 lakhs, spending 1 lakh 19,000. Somebody earning 300 lakhs, which is 3 crore, spending 10 lakhs, right? Then it will give a comparison. Abhi what proportion of our income we are spending on infrastructure, right? Right. So इसीलिए it's looked at proportion of GDP. A raw number say, you can't assess, and prices have changed, right? There is inflation. जो whatever you could have bought in 1,19,000, आप जितने किलोमीटर रोड तब बना सकते थे, अभी 10 लाख करोड़ में उतना किलोमीटर होगा कि नहीं पता नहीं, because things have become more expensive. So that is why you Right. need a proportion, you need a percentage के हिसाब से. अगर if I tell you, then you know that time it was 4% of the GDP, now it is 3.5%. Then you will get a sense बढ़ा है कि कम हुआ है. तो सर एज वी हैव सीन, जैसे यूएसए ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर अपना इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग किया, बहुत केपेक्स किया. एज अ रिजल्ट वी हैव ग्रेट रोड नेटवर्क, ग्रेट नेटवर्क, ग्रेट इंफ्रा, सब कुछ अच्छा है वहाँ पर, एंड दैट अलाउज बिजनेसेस टू फ्लरिश. फिर चाइना ने भी Yeah. सेम किया 1990s एंड 2000s में. वहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, दैट अलाउज फ्री ट्रेड. फ्री कितना बोलेंगे वो पता नहीं, बट दैट अलाउज ट्रेड. तो Yes, yes. डू यू थिंक हम हमारी सरकार वही अचीव करने के लिए ये सब कर रही है? डू यू थिंक आर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो टू बिकम, एज पीपल से, चाइना प्लस वन या द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड? Yes. So here, they of course they are trying something similar, but each of these three episodes are different. जो यूएस के बात आप कर रहे हैं ना, तो दिस हैपेंड, दे केम आउट ऑफ अ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929. वहाँ पे क्या हुआ था कि देयर वाज 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 1932-33 आते आते unemployment rate was 25%. 25%. When I say unemployment rate, these are people who are willing to work, not able to find work. You see, it is not that जो घर बैठा है उसको तो छोड़ ही दो. Those who want to participate in labor. So the way they came out of this crisis was this Keynesian economics plan. जो आपने बहुत बार सुना होगा कि गड्ढा खोद और उसको fill it up and somehow make generate income in the hands of people instead of doing just digging wells and filling. They built infrastructure, and not only it created, as you said, benefited in their business, it also gave income in the hands of people during the process of creating that infrastructure. That itself led to a revival of their economy. In the short run, it led to their revival of economy because वो रोड बनाने के लिए बहुत लोगों ने काम किया होगा. They got income. Those who are sitting at home, they were absorbed, and that increased demand in the short run. In the long run, yes, as you said, it increased efficiency, उससे business बढ़ा, and it helped. Now China did something similar, but except in the case of China, अभी क्या हुआ है कि I think they did it rather, way beyond what was immediately required, and they have उनका जो debt है ना is close to 288% of the GDP, right? So they have accumulated a lot of debt. Government has accumulated a lot of debt in the process of building infrastructure. While they've created infrastructure, China's debt is 288% of their GDP. yes, total debt, Okay. right? If, Okay. see, the officially declared is not, this is an estimate. See, everything in China is sort of estimate, okay? Officially declared number is nowhere close. Yeah. This is estimate. See, the problem is, अगर आप Google करोगे तो ये वो दिखेगा, उनका economy is 19 trillion and debt is around 20 trillion or something. But this is central government. But वहाँ पे क्या होता है? They create vehicles, जो investment vehicles, local municipality होता है ना, they create investment vehicles and they also borrow, which is effectively Okay. government borrowing. So if you add all of those, it's almost 3 times the GDP. If you just Right. Google and find out what is central government's debt, that is not, right? So if you consider really जो government debt है, that is almost 3 times their income. अगर ऐसे रोड से, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से immediate income आ जाता है, there is no problem. But not every road is useful, right? You build somewhere in some place, जहाँ पे कोई नहीं है, कोई business ही नहीं है, law and order नहीं है, there are other issues, human capital नहीं है, लोग नहीं है, then there is no,
Just because you have a road, it will not immediately lead to business, but you have to service Yeah. your debt, right? Hmm. Now that is why आप अगर देखोगे real estate firms, infrastructure firms, lenders who lend to infrastructure firms are in trouble in China. So Hmm. this is one case where they have gone overboard. So when in the US case, it was a solution to a depression. Hmm. It was a solution to a deep economic crisis that was there. But in China, this was used as a growth engine, right? So you have to Okay. learn what Chinese episode should tell you is that it has to be balanced. You can't just be building roads and airports and hope that you will keep growing forever. It Hmm. it has to be accompanied by everything else that is required for invest. आप सोचो अगर आपको कहीं नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो आप नहीं करोगे, बट देर आर Hmm. अदर थिंग्स, राइट? You need to worry about law and order. Imagine there is Hmm. good infrastructure, but law and order is bad. Will you invest? Hmm. May not be. No. You have to. हाँ. You need talent. You need trained people. अगर आप Hmm. अभी भारत में अगर आप किसी भी वर्कर को अगर आप बुलाओगे तो यू विल सी दैट there is a lack of skill, be it your plumber, be it your technician, be it just call anyone, you will quickly Hmm. realize that with some effort you can do better. There is a lack of training, electrician and these kind of and these are the areas where maximum people can be employed. Software and all can only take few. So all that I'm saying is, if you rely only on physical infrastructure and say that, मुझे थोड़ा, although I'm a fan of infrastructure, I'm a bit worried with some of the voices coming from the government. Hmm. ये वो लोग assume कर रहे हैं कि अगर रेलवे रोड वो सब बना दिया तो हो जाएगा. ऐसा Hmm. ऐसा ऐसा मैजिकल नहीं है. ऑफ कोर्स दीज आर इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ ये भी चाहिए. आपको हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्किल्स चाहिए. फॉर एग्जांपल Hmm. रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च किया वो विश्वकर्मा योजना, फॉर इंस्टेंस, यू नीड Hmm. दोस काइंड ऑफ, यू नीड दिस विश्वकर्मास, यू नीड स्किल्स. अगर स्किल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, देन यू विल हिट अ वॉल लाइक चाइना हैज हिट. चाइना में Hmm. डेमोक्रेसी इज अ प्रॉब्लम. Their population is declining now, right? So Right. what? Right. So the lessons to learn from US is that when you're in a crisis, it's a great thing to put in infrastructure and as a way of recovery. But China से आपको ये भी सीख, you get that it can't be just one way, right? Hmm. It has to be holistic. आप सिर्फ ये करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सिर्फ उसके वजह से ही ग्रोथ नहीं होगा. यू हैव टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, नॉट जस्ट फिजिकल I'll come to the fiscal deficit now. इंफ्रास्ट्रक्चर. आपने ऑलरेडी उसकी बात तो कर ली है, बट एक लेमैन टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट ये है कि आप अपना इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हो, राइट? बट लेट्स लुक एट नंबर्स, क्योंकि आज हम हम्म. नंबर्स बात कर रहे हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं. 45 लाख करोड़ इज व्हाट दे आर गोइंग टू स्पेंड. यू नो हम्म. दे आर गोइंग टू स्पेंड 45 लाख करोड़. नाउ पैसा कहाँ से आएगा? एक सोर्स है टैक्सेस, राइट? हम्म. सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स आता है दिस ईयर एस्टिमेटेड इज 23 लाख करोड़. सेंट्रल गवर्नमेंट को हम्म. जो जा रहा है, दे विल कलेक्ट 33 लाख करोड़, बट 10 लाख करोड़ दे विल गिव इट टू स्टेट गवर्नमेंट. तो ओके. आपको खर्च करना है 45 लाख करोड़, आपका टैक्स इनकम है 23 लाख. बाकी हम्म. 3.5 लाख करोड़ दे विल गेट फ्रॉम डिविडेंड्स. ये पीएसयू जो होता है उसका जो डिविडेंड मिलता है एंड ऑल काइंड ऑफ हम्म. अदर इनकम, राइट? आरबीआई हम्म. डिविडेंड एंड तो हो गया 26. And then they are going to do some disinvestment. They will sell shares of some government companies. वो 60,000 करोड़ या कुछ है this year का हम्म. टारगेट. हम्म. तो इवेंचुअली दे विल मेक अराउंड 27 लाख करोड़. पैसा आएगा 27 लाख करोड़, खर्च करना है 45 लाख करोड़. कहाँ से हम्म. लेके आओगे? 17,80,000 या 90,000 करोड़ इज द डिफिसिट. हम्म. इट्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्पेंडिंग एंड टोटल रिसीट्स. इनकम नहीं, ऑल ओके. रिसीट्स. हम्म. बिकॉज जो गवर्नमेंट शेयर्स बेच के जो मिल रहा है आपको, वो कैपिटल रिसीट है, वो आपका इनकम नहीं है ना. इट्स जस्ट जैसे घर बेच के किसी को कोई पैसा मिलेगा, दैट्स नॉट इनकम. दैट इज लाइक अ राइट. कैपिटल रिसीट. यू विल गेट इट एवरी ईयर, राइट? सो हम्म. दैट इज कॉल्ड फिस्कल डिफिसिट. नाउ हम्म. द क्वेश्चन इज, वो कहाँ से आएगा पैसा फिस्कल डिफिसिट? देयर आर टू वेज टू फाइनेंस दिस. एक तो प्रिंट मनी, दैट विल हम्म. बी डिजास्टर. If you print money, राइट. then money will lose its value. The other option is borrow. 12 lakh crore they borrow from the markets, हम्म. bond में, government bonds, and बाकी 4-5 लाख करोड़ they borrow from ये small saving scheme, NSE and all.
Fiscal deficit is effectively the money the government borrows to finance its expenditure. So that is its definition. So as I said, that as a percentage of GDP is what people look at, which is expected to be 5.9% this year. Ideally, what should be the government's target कि कितना range होना चाहिए fiscal deficit का? आपका इंटरेस्ट सर्विसिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. देयर आर टू फैक्टर्स हियर. जैसे मैंने कहा कि आप वो फिस्कल डिफिसिट जो बोरो करके आप कहाँ इसको डाल रहे हो, क्या कर रहे हो उससे. अगर आप उससे आप कॉन्फिडेंट है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, देन 5-6% इज नॉट टू हाई. इफ यू आर वेरी श्योर, इफ यू आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इफ यू आर, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी रोड बना दो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा टोल्ड यू बिफोर कि ऑल ऑफ द थिंग्स हैव टू, इनफैक्ट देयर इज अ वेरी नाइस स्टडी. अगर आपका कोई ऑडियंस इफ दे आर इंटरेस्टेड, देयर इज अ पेपर बाय अशर एंड नॉसिद. इट्स इन द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू इज अ टॉप जर्नल इन इकोनॉमिक्स. अशर एंड नॉस, दे लुक एट ग्राम सड़क योजना. ग्राम सड़क योजना इज डन फिनोमिनली वेल. अगर कोई भी गांव रोड दिखेगा, ऐसा नहीं कि दे हैव नॉट बीन करप्ट, दे हैव एक्चुअली इंप्लीमेंटेड रोड. बट देन उसमें एक रूल है, अगर आपका पॉपुलेशन 5,000 से कम है, देन दिस सड़क योजना विल कम इन. 5,000 से ज्यादा है, देन योर गांव इज नॉट एलिजिबल. आप इसमें ये सड़क योजना के अंदर आप एलिजिबल नहीं है. सो नाउ व्हाट दे लुक एट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ विलेजेस जस्ट बिलो 5,000, जस्ट अबव 5,000, जहां पे सड़क आई और जहां पे सड़क नहीं आई, राइट. एंड दिस इज दीज आर सिमिलर विलेजेस. सी नहीं तो otherwise compare Bombay to some village, it's nonsensical, right? कोई मतलब so many things are different. But imagine these are similar villages. जिस जहाँ पे एक जगह पॉपुलेशन है 4,500, किसी और जगह है पॉपुलेशन है 5,500. 5,500 क्योंकि 5,000 से ऊपर है, वहाँ पे एक सड़क योजना नहीं आया. Now what they find is they some improvement. ऐसा नहीं कि कुछ फायदा नहीं हुआ. People's movement to other villages increased. People started going out for work. बट ऐसा भी नहीं है कि ड्रामेटिकली कोई फर्क आया रोड की वजह से. ये जो विलेजेस में रोड आया, ऐसा नहीं कि वो 3 गुना रिच हो गए. जैसे आज आज गवर्नमेंट जो नरेटिव है ना, एंड इनोसेंटली दे आर बिल्डिंग दिस, एंड आई डोंट क्वेश्चन देयर मोटिव्स, बट मुझे लगता है कि दे आर फॉलिंग टू दिस ट्रैप दैट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही ग्रोथ होगा. नहीं होता ऐसा. You need the holistic. Infrastructure से होता है, very important, but this paper they should read carefully and consider this evidence. सड़क योजना में रोड बन, you can actually go and see there are very nice roads in because सड़क योजना they did benefit. ऐसा नहीं कि benefit नहीं हुआ, but it is not, ऐसा नहीं है कि people say fiscal multiplier. ऐसे बोलते हैं fiscal multiplier. What is fiscal multiplier? You put in 1 rupee into roads, it will generate GDP of 2 rupees, or then the fiscal multiplier is twice. ऐसा नहीं है. Maximum 1.1 and 1.2 is what. So when you look at fiscal deficit, the question you have to ask is it getting invested for productive purposes? इससे अगर productivity बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, then you need not worry. 5-6% should be okay. But if it is not going to lead to productive purposes, and when I say unproductive, I am also including infrastructure which is not going to create value. मान लीजिए आप कहीं कोई गांव है, वहां पे आपने एयरपोर्ट बना दिया, क्या करोगे एयरपोर्ट बना के? You know what it will it will lead to nothing, right? Maybe 50 साल बाद, 100 साल बाद, जब वो it will turn into even though then maybe it's useful, but immediately उसे कोई फायदा नहीं होगा. So even that kind of infrastructure is wasteful, right? So the question is, it's not an absolute number. Two things you have to take into account. One is whether productively. Second, इंटरेस्ट पेमेंट आपका. अभी जैसे मैंने कहा कि 45 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है. मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपको 20 लाख करोड़ देना पड़े, 15 लाख करोड़ देना पड़े. सो देन वेयर आर यू गोइंग टू पे इट फ्रॉम? इट विल हैव इम्पैक्ट बिकॉज देन यू टैक्स बढ़ाना पड़ेगा. टैक्स अगर बढ़ाओगे तो देन इट विल इम्पैक्ट बिजनेसेस. तो दीज टू थिंग्स, इन पेइंग कैपेसिटी and how this fiscal deficit is going to be used. One thing is very clear. If you use fiscal deficit for distributing money or fees as a permanent solution in a crisis, अलग बात है. अगर कोई आप crisis में हो, then it's a different story. But during normal time, fiscal deficit बढ़ा के if you announce a free distribution of something, that will be a disaster. फिर you are going in the direction of Sri Lanka, you are going in the direction of Zimbabwe, you are going in the direction of Venezuela. That is something, is a clear disaster. Do you recall some bad Capex investments? Yeah, so one example I told you, right? I don't want to name any village and all, people in those villages will. But as I said, just building airports.
right? Hmm. Randomly building airport for what? How many people are going to travel? One flight will go in a week. So what is that? What is that? I'm not saying it is useless. It's useful to some. That will definitely be a bad one. Second, uh, you know, uh, of course, there are strategic reasons why you do it in some places, and that they are important. Defense purposes and all that, they are important. Hmm. People have studied, in the US, because the problem here is there are no careful studies about fiscal multipliers in India. Fiscal multiplier, as I've told you, definition ये है कि अगर आप 1 रुपए खर्च करते हो, इससे कितना, what is incremental GDP, इससे आपका लॉन्ग टर्म इनकम कितना बढ़ता है, दैट इज फिस्कल मल्टीप्लायर। 1.5 2 का मतलब है यहाँ पे 1 रुपए इन्वेस्ट करने से आपका इनकम 2 रुपए बढ़ेगा। सो ऐसा केयरफुल स्टडीज नहीं है, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस देर आर मेनी स्टडीज, बहुत स्टडीज, उसमें कोई कंसेंसस नहीं है। सो देर आर सम इन्वेस्टमेंट्स वेयर फिस्कल मल्टीप्लायर हैज बीन क्लोज टू 2, देर आर सम इन्वेस्टमेंट्स वेयर इट 1 पॉइंट। आप सोचिए, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर इज रियली बैड, पैथेटिक, राइट? Right. बहुत बढ़िया रोड बना, नॉट डन एनीथिंग टू कर्ब इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, कोई फायदा नहीं है। Hmm. Where human capital is, because see, either you have to have local human capital or somebody has to come from outside, right? You don't allow both of them, Hmm. right? Law and order, nobody is going to come there. अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है तो बनाओ। मेरे पास, आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्शन, ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, आप इसको बोरो कर रहे हो। मान लो आपके पास 5,000 करोड़ है, क्वेश्चन इज, शुड यू स्टार्ट 5 एयरपोर्ट्स इन दोस प्लेसेस, और शुड यू allocate 5,000 crore मोर टू आयुष्मान? अभी आप, बार बार मैं आयुष्मान भारत के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिकॉज आई हैव स्टडीड, इट्स अ वंडरफुल स्कीम एंड इट हैज लेड टू अमेजिंग बेनिफिट्स, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी, although you can go to a private hospital, गवर्नमेंट हैज पुट अ कैप ऑन एवरीथिंग, मतलब इस ट्रीटमेंट का प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, डॉक्टर्स फीस कैन नॉट बी मोर देन दिस मच, मेडिसिन कैन नॉट बी मोर देन दिस मच। पहले आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एनओसी या कुछ लेके आना पड़ेगा, तब तक व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट, गॉड अलोन नोस। देयर आर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम गवर्नमेंट हैज पुट इन बिकॉज दे हैव एलोकेटेड लेस मनी, क्योंकि उन्होंने Right. बजट में 7 करोड़ एलोकेट किया है। सो इफ यू मेक दिस freer, therefore people cannot go to the best of the hospitals, because Right. agar cap prices, there is a problem. So if you can allocate, my point is, instead of opening that airport in that shutter wala case, why not put some more money into Ayushman Bharat? That will, and or Vishwakarma scheme, Vishwakarma scheme, that's at least in theory, I don't know how it is working, I've not studied. Hmm. It is supposed to, just imagine giving another fishing net to a fisherman, giving a tool to some artisan. These are amazing investments. इसका जो Right. फिस्कल मल्टीप्लायर है ना, ये, और पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर को ये लोग लोन दे रहे हैं, तो इसका जो फिस्कल मल्टीप्लायर इज फार मोर। द प्रॉब्लम इज दीज आर नॉट ग्लैमरस। जी, अगर Right. आप कोई है ना, आप दिखा सकते हो, कोई एमपी ट्रैवल करेगा, फर्स्ट डे तो एमपी आएगा, उसके बाद कभी नहीं आएगा। एमपी, एमएलए, first travel, or it's a feel good thing, though, and I have sympathies. I also come from a village. I have sympathies for people in the villages. They feel good, they may not like if I say उनके गांव में एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गांव वाले एयरपोर्ट फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, गांव के लिए पहली जो प्राथमिकता है वो हेल्थ होना चाहिए, एयरपोर्ट बाद में होना चाहिए। अगर आपके यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक नहीं है, अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, in terms of economic benefit, health and education have a bigger, and health, education and small businesses. ये विश्वकर्मा scheme, I keep repeating. If Vishwakarma scheme works well, that will be amazing. So if you have two options, right? One, किसी को फ्री में पैसा दे दो, वो घर में पड़ा रहेगा। Then give the person a tool to work. They are different. ऑटो रिक्शा दे दो, give let them replace their existing tools जो खराब हुआ है, they are not able to invest. That has tremendous implications on the economy. Right. So I would prefer these kind of schemes than grand infrastructure, and as again, I'm not saying infrastructure nahi hona chahiye, don't mistake me, infrastructure is useful. So if I rank, giving totally free stuff to people who are not in distress is the worst thing you can do. Able bodied persons, unko free dena, that's the worst thing you can do. ये आपने बहुत अच्छी बात बताई एंड मैंने क्विकली इसको रिलेट भी किया कि स्मार्टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स कमिटीज़ एंड इवन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स सब इस ट्रैप में फंसते हैं। एक नॉर्मल स्टार्टअप अपना फंडिंग लेने के बाद
कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी को लाकर उसको प्रचार कर देगा या आईपीएल में वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर देगा स्पॉन्सर वो। करके वर्ल्ड हाँ, कप टीम में वो अपना नाम छप फीफा फीफा तक चले जाएंगे। बट देन इट डजंट just doesn't translate to profitability. But at the other hand, there are ruthless startups and companies जिन्होंने उससे 1/10 1/20th ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स में भी स्पेंडिंग में भी उतना आरओआई जनरेट कर लिया, बट वो ग्लैमरस नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक टाइम पे 50 काम हो सकते हैं उस सेम पैसों से, बट हम सोचते हैं कि नहीं, जिससे सबसे ज़्यादा आई बॉल्स अट्रैक्ट होती है हम वो कर लेते हैं, एंड दैट्स वेयर वी फेल। and the other thing is keep yourself healthy and learn more. अगर आप if you learn more then your quality of your discussions will increase and उससे भी फायदा होगा. That's another thing. So yes, so this empire building ये बहुत मुश्किल, it's easy for a professor to talk that आपको ये करना पड़ेगा, but मान लो मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूँ या आप पॉलिटिशियन बन जाते हो, हम भी इसी ट्रैप में फंसने वाले हैं क्योंकि these are glamorous, right? इसमें राइट। दिखता है, बट ये विश्वकर्मा स्कीम में चिल्लाता रहूंगा किसी को, मतलब बहुत मुश्किल है ये। कुछ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स दिखते नहीं है ना। तो मैं आयुष्मान भारत में अगर आपको बोलूं, आयुष्मान भारत की वजह से व्हाट आई फाइंड इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज डिक्लाइन बाय 40-50%। जो गरीबों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है 40-50% कम हुआ है। ये एक स्टैटिस्टिक है, आई कांट शो इट टू यू, हाउ डू आई सेल दिस टू यू? आई कैन कीप सेंडिंग यू ईमेल, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, बट एक हाईवे या एक्सप्रेसवे या एयरपोर्ट आई कैन शो यू, राइट? आई कैन शो यू, ये देखो मैंने बनाया है। सो देयरफॉर इट इज मोर अट्रैक्टिव इवन फ्रॉम अ पॉलिटिकल। तो मे बी शायद अगर मैं और आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हम भी वही करेंगे, तो मुझे लगता है। ट्रू ट्रू ट्रू। इसी के साथ सर, जैसे अपना हाईवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, राइट। आप कहीं भी जाओगे आपको रोड मिलेगा, इवन वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी इंडिया में ही है। सो नीडलेस टू से हाईवेज और रोड नेटवर्क पे बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्टिविटी, उसका मल्टीप्लायर हाई होगा उन एरियाज़ में जहाँ पर ट्रेड होता है। सो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि NHAI जब रोड्स बनाता है तो NHAI ऑल्सो हैज़ टू बोरो मनी, बट आई थिंक इट्स नॉट काउंटेड इन द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। वो उसको यस। ऑटोनोमस बॉडी की तरह काउंट करते हैं। हाउ वाइज इज़ दैट? अगर उसको काउंट करेंगे तो अपना फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊपर चला जाएगा, बट इज़ इट जस्ट टू शो कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत कम है, बट इन रियलिटी अगर NHAI का भी ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है? हाँ, तो NHI इफ यू एक्चुअली गो बाय दैट वे, लॉट ऑफ PSUs को भी अकाउंट करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली थिंक अबाउट इट, जो बैंक का डिपॉजिट है ना, बैंक में जो डिपॉजिट है अल्टीमेटली इट्स इफेक्टिवली गारंटीड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वाला हाँ, डिपॉजिट, राइट। राइट? अगर कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट विल हैव टू कम इन। सो आई एग्री विद यू। सो बट पहले से अभी बेहतर है अकाउंटिंग, स्पेशली आफ्टर निर्मला सीतारमन हैज टेकन ओवर। द रीजन इज पहले जो फूड कॉर्पोरेशन, NHI छोड़िए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है दैट इज अ डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉडी। मतलब उसका तो ओनली कोई कमर्शियल है ही नहीं, MSP पे देते हैं, दे स्टोर फूड। उसका जो डेट है ना, फूड सब्सिडी जो देते थे, दैट यूज्ड टू कम एज डेट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नॉट एज गवर्नमेंट डेट। उसको भी नहीं दिखाते ओके। थे। सो अभी अच्छा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो डेट है दैट इज फोल्डेड इनटू द बजट। दैट्स वन ऑफ द रीजन 2019-20 में हमारा डिफिसिट सडनली 9.6% इसलिए गया कि 1-2 लाख करोड़ तो वो ऐड हुआ था। सो ओके। to that extent directionally we are going better. Truly yes, इकोनॉमिकली अगर आपको डिफिसिट जानना है, यू हैव टू कंसिडर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का भी 3.5% है डिफिसिट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 5.9, स्टेट गवर्नमेंट का 3.5, विच इज 9.5 हो गया। देन ऑल दीज गवर्नमेंट बॉडीज, देयर इज अ गवर्नमेंट, सो दैट इज व्हाई आवर डिफिसिट्स आर नॉट स्मॉल, दे आर बिग। तो इसीलिए मैं sometimes I get worried where some government from the government say that deficits are under control and we are doing capex and all that. Great, but direction, yeah, they are going in the right direction, but we have to keep this direction of going deficits down. During Jetli, we had gone almost up to 3.5%, only central government. So we have to go in that direction. So NHI, yes, it should be considered. But having said that, total deficit, yes, you should consider all. I agree with you. ठीक है।
उसके बाद डू यू हैव एनी फेवरेट पिक्स, कौन सी सिटीज़ या कौन से स्टेट्स में जो केपेक्स है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ है, एज अ रिजल्ट वी हैव सीन ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका मल्टीप्लायर भी बहुत अच्छा है? आप हैदराबाद आइए और हम्म, आपको हैदराबाद आना पड़ेगा इसलिए। आप आए थे ना लास्ट टाइम, मैं आया तो था। आप गच्चीबौली एरिया में एक आप इफ यू स्पेंड सम हाफ एन आवर, दैट इज वन प्लेस। एंड आई सी आई कांट रैंक ऑल सिटीज, मैं गया नहीं हूँ तो डेटा के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते। And I'm telling this, I live in Hyderabad, especially the Gachibowli kind of area in Hyderabad. If you come, it once you come from the airport, it looks like a developed country. Of course, you go 10 राइट। kilometers later, that's a different country. हाँ You हाँ। know, yeah, I don't want to present a unrealistic picture to people, but at least that 5 kilometer, maybe 3-4 kilometer radius from the place where ISB is located, infrastructure has become world class. Now metro is coming, you have flyovers, you have, airports, and fortunately the traffic is also not that bad. Hyderabad has done phenomenally well, and it's reflecting in, if you look at new houses getting built, new investments coming, Hyderabad is picking up. If they continue like this 10 years from now, I see much bigger growth in Hyderabad compared to other cities. And unfortunately, I told you last time I'm heavily biased towards Karnataka. I come from there, but then that not much as infrastructure development has happened in Bangalore, for instance. That would be among the two cities that I see carefully. I would say, despite my bias being on the opposite side, you should remember, uh, this Hyderabad has done phenomenally well, compared to Bangalore. And I don't know, I have not visited all the cities, so I won't be able to comment on others. ओके, एंड डू यू थिंक जो इंफ्रा में जो इन्वेस्टमेंट है केपेक्स का आने वाले 10 साल में और बढ़ेगा? एंड अगर बढ़ेगा तो किन किन एरियाज़ में बढ़ेगा? आई मीन बढ़ना चाहिए, वो आपने बताया कि हेल्थ में और एजुकेशन में आना चाहिए, बट लेट्स Right. टॉक अबाउट प्रॉपर जो कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉट जस्ट फॉर शो, क्वालिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ने की उम्मीद है? See, I think one of the things that we should do is this, जो स्मार्ट सिटी वाला जो प्लान था ना, अगर वो implement, so ultimately the growth engines are urban areas. आप हम we are used to talking about this fashionable things that 60%, 50% गांव में and all that. It is true and they are important, but biggest growth come from urban area, and urban infrastructure has to improve, especially in these busy areas, cities like Bengaluru or Chennai or Delhi, areas connecting between. आपको मैं हैदराबाद बैंगलोर जो रोड था 5 साल पहले, if you and I drive regularly between Hyderabad and Bangalore, एंड 5 साल पहले इट यूज टू बी एम्प्टी. आई यूज टू थिंक इतना बड़ा रोड क्यों बनाया, क्यों, आई कुड ड्राइव इन 6-7 hours, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं. 5-7 साल पहले, नाउ इट इज लुकिंग लाइक अ सिटी. इट टेक्स 2 hours more. So राइट। these cities are growing so much that any infrastructure that you created becomes inadequate within like 3 years. So I think राइट। within that, it is priority should be to decongest these areas, or create better, or that should be priority number one. Of course, as I said, it should be more. You should think about a bank for the buck. अगर 1 रुपए आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, दैट शुड बी योर metric, not not some election or anything else. That should be the metric. And that way, I think, yeah, आपने जो कहा कि highways have become really good. Since I go on long drive, it's saving like 2-3 hours. You know, if you're driving like 700 kilometers 5 years ago versus now, you take 2-3 hours less. So wherever there is traffic, wherever it's going to help businesses, wherever you think investment is going to come, other conditions are conducive, you should focus on those areas. Okay. So, as a retail investor, would it be wise for me to bet on infrastructure sector? Yeah, one area you should bet on clearly is power. I've been telling, because I'm associated. Let me give you a disclaimer. As I told you, I'm on the board of Power Finance Corporation. Power reforms is one area where government has done really, really well. And these are the kind of, there's a scheme, I don't know whether you know or not.
there's a scheme called RDSS. Your viewers can Google. It's called revamped distribution sector scheme, RDSS, right? Revamped distribution sector scheme, and government has allocated around 4 lakh odd crores, and out of that, Okay. 1.5 crore comes from the budget. The beauty of the scheme. I'll give you three dramatic things that have already happened. Okay. स्टेट डिस्कॉम्स जो होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सारे एवरी स्टेट हैज डिस्कॉम विच इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. उनका जो एक्यूमुलेटेड डेट है ना, जो विच इज वहां पे, उसमें क्या होता है, राज स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस फ्री पावर, राइट? मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स गिव फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चर. अभी तो दे आर गिविंग, कर्नाटका में हुआ, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है. दे आर गिविंग फ्री पावर टू कॉमन पीपल ऑल्सो, रिटेल यूज. बट ये लोग स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, पैसे नहीं देते डिस्ट्रीब्यूशन Okay. कंपनीज को. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बाइस इट फ्रॉम जनरेटिंग कंपनी, but state Okay. government doesn't give money, and distribution companies borrow, and ऐसे borrow Okay. कर accumulated debt is 1,50,000 crore last year. अभी RDSS, these, it's to get this new investment from the central government, they have to clear their debt in 4 years, 48 installments. ये Okay. 2021 में शुरू. 1,40,000 crore से already debt 75,000 crore तक आ चुका है. 50% of the debt is paid already. Okay. 50% reduction जो इतने सालों से accumulate हो रहा था ना, that has come down. The second thing, per unit जब generate होता था, this is called ACS ARR gap. What is the loss per unit? This used to be 51 paisa. If you Okay. generate unit of electricity, companies used to lose 51 paisa. It has come to 15 paisa now. The third thing that has happened is there's something called AT&C, technical and commercial losses. This used to be 22%. If you spend 1 rupee, 22 paisa loss, it has now come to 15%. All this Okay. happened because of this scheme called RDSS, where discoms are incentivized to become more disciplined. They have to publish their Okay. accounts, they have to install smart meters, they have to pay dues on time. So this is an amazing reform. This, infrastructure reform of this kind is really, really beneficial. So your viewers should read this, RDSS, and power sector stocks have already gone up dramatically. But I think if they continue with this, the kind of benefits that country will reap is going to be really, really, is going to be really high. और एक और चीज हुआ है, जो G20 में, the restriction, there was a fear that other countries, there will be an agreement that coal use पर कुछ restriction आएगा. ऐसा नहीं हुआ है. तो India will continue using coal, and therefore I think power sector, but there is a risk also. Everybody starts announcing free power one day, वो भी देखना. So far so good. But if every state government announce, I think looks like this will become a norm now. Everybody has to announce free power. Then we will be in trouble. But so far I am very positive. Among all the infrastructure sector, if you tell me one pick of mine, that will be power. So you're overall hopeful ki in the next 10 years also, just like the Capex have gone up, it will keep going up and we will have great infrastructure, just like how Hyderabad has done it. Yeah, but I am also worried that it will lead to accumulation of debt. And if we don't improve human capital proportionately, then we will be in the Chinese situation. We have to improve human capital. सिर्फ physical capital से नहीं होता. That's why I'm happy that something like Vishwakarma came, but you need more allocation, more of those parallelly. So I would see, it's a bit nuanced. Somebody should not think that I am saying road mat banao, पर अगर अगर आप 14 लाख करोड़ मान लीजिए, इस साल 14 से 18 हो जाएगा ये, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट. आई एक्सपेक्ट 10 लाख करोड़ टू बिकम से 13 लाख करोड़ मे बी, एंड द स्टेट गवर्नमेंट वाला 4-5 लाख, मे बी 17-18 लाख करोड़. उसमें 18 लाख करोड़ में व्हाई नॉट थिंक अबाउट 3-4 लाख करोड़ फॉर दीज थिंग्स, ह्यूमन कैपिटल. दैट इज ऑल माई रिक्वेस्ट. करो आप, this is still very high. Historically, this is very important. Your viewers should know how dramatic has been increase for capex. 2013-14 में जो आपका बजट है ना, उसका 11% कैपेक्स में जाता था. 11%. टोटल बजट था 16 लाख करोड़. कैपेक्स इन्वेस्टमेंट वाज 1,80,000 करोड़, ऐसा कुछ था. अभी जो है
budget का 22% is going for capex, double. In fact, if you consider that additional grant जो state government को देते हैं, it is 30% of the budget. So dramatically there has been an improvement. But having said that, while so far so good, my recommendation is उसका mix थोड़ा tilt towards human capital. Don't just focus only towards railways, airports and roads and these ship, all this. About human capital also. At least 1/4 of it should come to human capital. That's all my recommendation. If that happens, I think the growth will be more balanced. नहीं तो there is a danger that you have, like China, you have amazing infrastructure, but productivity growth will stop and you are sitting with lot of debt and you don't know what to do now. मान लो अगर मुझे 5 स्टेट से निकाल कर एक रेलवे लाइन डालनी है तो लैंड एक्विजिशन से लेकर के इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स तक बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. हाउ डज स्टेट्स की तो बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट हाउ डज सेंट्रल गवर्नमेंट सॉल्व दीज चैलेंजेस? अगर उसको बनाना है, जैसे बुलेट ट्रेन बनाना है, तो हाउ इज इट मेड पॉसिबल? कभी कभी नहीं होता है. देखिए आप महाराष्ट्र में लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स गॉट स्टॉप्ड when the political party in power changed. So बहुत मुश्किल है. It is give and take. The states where there are some states like Orissa and Andhra, for instance, although ruled by Telangana, for instance, although ruled by different parties, they are pro infrastructure. They want infrastructure. They want ultimately develop benefits the state also, right? If you have a good infrastructure in a state, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा. जब people can go and come between cities easily, businesses will grow and उससे local economy को फायदा होगा and generally people in the state will feel good. So and they grow. So there are state governments even in the opposition parties who think like that and वहाँ पे थोड़ा आसान है. There are states where they have to oppose everything that center does. वहाँ पे नहीं हो सकता. तो नहीं हो रहा. I gave example of Maharashtra, right? lot of things got stalled. तो वो भी हो सकता है. That's why I said this is all difficult. Imagine आप करो, आपको पीएम किसान को 6,000 से 12,000 करना है. किसी से वहाँ पे भी all is one state, इन्होंने लिस्ट ही नहीं. But other than that, every other state, including Congress ruled states, have given a list. बटन दबाओ हो जाएगा. वो in fact building that बटन दबाना infrastructure is not easy. I'll tell you, DBT infrastructure जो इन्होंने create किया, that is infrastructure. That is great. But having created that infrastructure, it is easy. So question is, make a railway line or cash transfer. Cash transfer looks easier, more attractive, especially in an election year. Railway line is difficult. But at least in railway it is visible. Vande Bharat दिखता है. But Ayushman Bharat में कुछ नहीं दिखेगा. आपको सिर्फ statistics दिखेगा. विश्वकर्मा में क्या दिखेगा? You can show some videos कि कोई बोल रहा है कि मुझे benefit मिला and all that. But उसमें सबसे ज़्यादा benefit होगा. जिससे ज्यादा बेनिफिट है उसमें मार्केटेबिलिटी बहुत कम है. जो वर्स्ट है कैश ट्रांसफर, उसमें मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा है. दिस इज द प्रॉब्लम. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? इफ आई गिव यू 2,000 रुपीज पर मंथ कैश ट्रांसफर, उसमें सबको डायरेक्ट मिलेगा ना इमीडिएटली. तो पॉलिटिकल अपील तो बहुत ज्यादा है उसमें. वेयरएज आपको मैं कहता हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट का एक स्कीम है, రైతు बीमा. ओके, में क्या होता है? If a farmer dies, they give them 5 lakh rupees insurance cover. And they've done it in a very disciplined manner. They have actually bought life insurance policy from LIC. Okay. Sarkar 4,000 या almost 5,000 crore, they give it to LIC as a premium. And अगर कोई farmer का death होता है, तो LIC gives 5 lakh rupees to this family. Okay. Amazing scheme. यहाँ पे I won't call it a freebie. Because if a bread earner dies, family needs protection. Right? It's not freebie. Those kind of schemes are. But आप सोचिए इसका political फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि people think they are not going to die. And if you give me some after my death, who cares? Whereas they have a bad scheme which is called Rait Bandhu, where they give cash. In fact, more the land you have, more cash you get. I don't understand the logic at all. There are people who get, it's 4,000 rupees per hectare. If you have 10 hectares, you get 40,000 rupees. Okay. You are more cash transfer from the government. This is, but those schemes are popular. Right? The problem is, good schemes are same government, right? This is an amazing scheme. I have not seen any government scheme. US government has to learn from government of Telangana.
यूएस गवर्नमेंट इंश्योरेंस देता है, यू नो आई टोल्ड यू राइट, उनका जो हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये 4,000 करोड़ किसी को प्रोवाइड नहीं किया है इन्होंने अभी, इट विल कम अप लेटर 10 15 साल 20 साल बाद। बट तेलंगाना गवर्नमेंट हैज बीन प्रूडेंट कि ऐसा नहीं, सी उनको दे कुड हैव जस्ट अनाउंस नो कि कोई भी फार्मर का डेथ होता है हम हमारे बजट से 5 लाख देंगे, दे कैन से दैट, और अभी कुछ प्रोवाइड नहीं करना, जब डेथ होगा तब देखा जाएगा, राइट? ऐसा नहीं करते वो लोग। हर साल उनके बजट से 4,000 करोड़, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 4,000 करोड़ LIC में भरते हैं प्रीमियम, जैसे आम आदमी यू नो भरता है, राइट राइट सच ए स्कीम। वही सरकार दूसरी तरफ ये देखो, पर हेक्टेयर 4,000 करोड़, 4,000 रुपए, 2 हेक्टेयर है तो 8,000 रुपए फ्री, यू नो वो भी कर, वो फ्री वाला है ना, उसमें अपील ज्यादा है। ये एक्चुअल उसका अपील कम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। That is why, you know, politician, agar you and me also come, if you have to close one scheme, we will close this right to Bima scheme first. अभी तो आपको कर्नाटका में हुआ, ऑपोजिशन पार्टीज आर ऑलरेडी, आई सी एवरीवेयर इन हैदराबाद पोस्टर्स की, आपको पर महीना 2,000 रुपए मिलेगा, गैस 400 रुपए में मिलेगा, बिजली 300 यूनिट फ्री मिलेगा। अगर वो सब करने के चक्कर में ये लोग ये राइतु बीमा को बंद कर देंगे तो दैट विल बी अ डिजास्टर। बट देन पीपल वोंट रियलाइज, जैसे आपने कहा कि नॉट एवरीबडी रियलाइजेस व्हाट इज गुड, दैट्स वो अनफॉर्चुनेट। नुकसान होने के बाद ही समझ में आता है। हाँ, नुकसान होगा, मतलब हम लोग व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यू विल नॉट बिलीव, एंड यू आर वन जनरेशन लेटर टू, and I have grown up in a reasonably prosperous village. 6 hours, 8 hours used to top power cut. 6 hours, you know, 6 hours and then 2 hours again at night. हम लोग क्रिकेट मैच कभी फुल देख ही नहीं पाते थे, एंड वी हैड टू प्रे दैट इंडिया बैटिंग सेकंड हो, क्योंकि आज पावर कट सुबह हो रहा है 6 बजे से 12 बजे, तो तब डे नाइट मैच नहीं होते थे। तो दिस इज व्हाट यूज्ड टू प्रे, एटलीस्ट होपफुली टुडे इंडिया शुड बैट सेकंड, नॉट बिकॉज ऑफ द पिच, एटलीस्ट द पावर कम्स एंड वी कैन वॉच द मैच, राइट? समझ नहीं रहे हैं कि ये फ्री के चक्कर हम लोग वापस चले जाएंगे, वी विल गो बैक टू द सेम प्लेस, and it will hurt the very same beneficiaries who are now very happy with these freebies. That's a very sad part. True. Whereas Raitu Bima kind of a scheme, or a Vishwakarma kind of a scheme, or Ayushman Bharat kind of a scheme is beneficial, because there you are giving money to people who are in trouble. That's the job of the government. Government is there to help those who are in trouble, not to those who are lazy, who are able-bodied and who want to just sit and eat around. ये तो सर आपने थोड़ा वो डीप थिंकिंग वाली बात बोल दी। मतलब इट्स अ सैड रियलिटी कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमें ऐसी स्कीम्स चलानी भी पड़ती हैं, फिर हम लोगों को बोलते हैं कि आपका राइट है आप वोट करो, बट हमको पता ही नहीं हम काय के लिए वोट करते हैं। तो इट्स एन एंडलेस लूप। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे तब तक लोग अपना राइट नहीं मांग सकते, अपना हक नहीं मांग सकते। उनको यही नहीं पता कि उनके लिए गुड या बैड क्या है। वो बैड चीज़ों से इम्प्रेस होकर बैड चीज़ों के लिए ही वोट करेंगे, एंड फिर पॉलिटिशियन तो फिर वही करेगा जिससे उसको वोट मिल रहा है। राइट, तो फ्री पावर इज अ ट्रैप, यू नो, उससे पॉलिटिशियन भी फंसेंगे, यू नो। कैश यू कैन स्टिल गेट अवे विद, मतलब आप सोचिए, पॉवर्टी इज मोर इन बिहार देन इन कर्नाटका, राइट? तो कैश ट्रांसफर कहाँ होना चाहिए? बिहार में होना चाहिए, राइट। बट क्यों नहीं कर सकते? पैसा नहीं है उधर, देयर इज, यू नो, they are not able, here there is money, right? Because the budget is decent, but they have done cash transfer they can still get away, but electricity free जो कर रहे हैं ना, that is a trap for politician also. Not every state is Delhi can escape because Delhi has huge tax collection, but मैंने ऐसे कहा, मैंने अभी कहा RDSS जो स्कीम है, that according to that, after that state government को कोई free नहीं देगा, they will have to pay for electricity. Now more and more you give free, your money available for other things, there will be a time where you will not have money to pay salaries. You know, you will be giving this, you know, you will not be able to pay government employees, you won't be able to hire police, you won't be able to hire teachers, you won't be able to hire people for healthcare, and it will hurt people. जो लोग ये नहीं समझ रहे कि जो पॉलिटिशियन फ्री दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, they are not giving from their pocket, they are taking from some other thing that would have come to them, you know, which should be beneficial in the long run. वहां से पैसा निकाल के अभी फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई इंडस्ट्रियल इसे ले रहा है, नहीं, दे आर नॉट टेकिंग फ्रॉम एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और एनीवन। जो आप ही को मिलना था हेल्थ के, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ बेनिफिट, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन,
in the form of law and order, in the form of better infrastructure, उसको कम करके उसकी जगह आपको 2,000 रुपए पर महीना दे रहे हैं. अगर चाहिए तो ले लो, then you will suffer. That is something that people have to understand. ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर टैक्स लगा के, अगर टैक्स लगाओगे ज्यादा, इंडस्ट्रीज विल क्लोज डाउन. So then you will have to attract industries. So then what to do? For example, Karnataka mein, now to attract industries, you know what they're doing? They are doing some preferential power agreement because इन्होंने power price बढ़ा दिया industries के लिए. Now what do you do when you increase power price? New industry investment will not come. So now you have to give them a preferential treatment. So सोचो, large industry will get power at low price. Small scale industry fellow will pay 7 rupees to give free power to you and me. क्या logic? Why should I get? I don't understand it. Right? Right. This is what they're doing, and so that the children after 50 years from now can again say that I studied under street light and all. This is where they're Rightly said. Rightly said. एक वहाँ last पे, question पूछूंगा. this, and it's not just Congress. Madhya Pradesh is also, at least Karnataka has fiscal capacity. Madhya Pradesh doesn't even have that. Right? Even they are going that path. Ladli Behna Yojana क्या है? Ladli Behna is same thing. You call it whatever name. गृह लक्ष्मी कहो, लाडली बहना कहो, बीजेपी दे, कांग्रेस दे, अल्टीमेटली इफेक्ट तो वही होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एटलीस्ट देयर आर सम सेंट्रल गवर्नमेंट, एटलीस्ट आई शुड से, दैट हैज बीन फार बेटर. ऐसे जैसे मैंने कहा, इलेक्शन के 1 साल पहले सब्सिडी कम करना कोई कम अचीवमेंट नहीं है. कोई नहीं कर. आई डोंट थिंक मोदी जी के अलावा अगर कोई और होता तो दे वुड हैव डन इट. दैट इज एन अचीवमेंट. And there are some good states, as I said, Orissa, different parties who have been reasonable. थैंक यू सो मच सर. एक छोटा सा क्वेश्चन और है. इफ़ यू हैव एनी आइडिया, दिस समथिंग कॉल्ड स्मार्ट मीटर्स. अभी जो आई हर्ड अबाउट इट, मैंने भी वेरीफाई नहीं किया है, बट जैसे यूएस में देर आर वेरिएबल प्राइसेस फॉर पावर. आपको रात में बिजली सस्ती मिलेगी, दिन में महंगी हो जाएगी. इज दिस अ सिस्टम जो हमारे यहाँ पे भी आ रहा है? हाँ, तो आज मैं इनफैक्ट ये तो ऐसा लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन प्लांट किया है क्योंकि I wanted to say about that RDSS. RDSS का मेन रिफॉर्म वही है. See, I did not explain it properly. मैंने कहा RDSS से क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों ये आपका जो लॉस है 51 पैसे से 15 पैसे कैसे कम हुआ. What they are doing is they are rolling out smart meters. Smart meters are prepaid. अब क्या कर रहे हैं, they are installing that in government. आपको एक बात पता है कि ये 1,40,000 करोड़ जो डेट है ना डिस्कॉम, इसका सोर्स क्या आपको पता है? बिगेस्ट सोर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिस. They are not paying their electricity bills. Right? Of course, households are also defaulting. There are many households who don't pay. Biggest defaulters of power are government department, state government department. वो लोग पे नहीं करते. कोई कलेक्टर ऑफिस हो, कोई पुलिस स्टेशन हो, दे आर नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी. अभी दे हैव इंस्टॉल्ड अ स्मार्ट मीटर इन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, बिहार. दीज टू स्टेट्स हैव डन, द प्रोग्रेस इज फास्ट. अभी क्या होगा, ये स्मार्ट मीटर विल बी प्रीपेड. तो प्रीपेड तो अगर इफ यू डोंट पे और यू डोंट हैव इट डन, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग देयर you can have variable power, you can have peak hour pricing. You can have, when power is available, price is low, at peak hour price is higher, so that your use can regulate. You can आप कम कर सकते हो use, and save money, like any other thing. Laws of market, demand and supply. अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा. So they are going in that direction. They want to install 20 crore smart meters in next 3-4 years. This is the goal. Right now I think not even 1% has happened. RDSS का मेन अचीवमेंट अगर हो जाता है कि then power sector problem will be solved for good. क्योंकि all these accumulation of all सब खत्म हो जाएगा. You pay for power, and even अगर आप free power दोगे, state government will have to give you money to recharge that smart meter. They can't give you free. So that will be different. So this is one reform that is going on, and power ministry is trying its best. But उसका political implication देखना पड़ेगा. आप देखिए इलेक्शन से पहले हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कोशिश की और वो हार गए, राइट. तो इसका पॉलिटिक्स क्या लेंगे मुझे पता नहीं.
If they start taking a political lesson that this is politically not so good, then this may not happen also. Okay. But ये शुरू हो चुका है स्मार्ट मीटर वाला, Okay. एंड अभी तक it has given fabulous results, but 99% not किया अभी. But you fear that it will take greater political will to execute it 100%. At the state, there is resistance at the state level. See, the design of RDSS is amazing. You should, I'm not praising RDSS because I am associated with power sector. I have never met the power minister. I have met other ministers. I don't even know power minister personally. But whatever I've heard and whatever I read about RDSS is this: कि government has, इन्होंने क्या किया कि they have allocated some money from the budget, but state को ये पैसा तभी मिलेगा जब वो implement करेंगे. हाँ. उदय स्कीम और आरडीएसएस में फर्क किया है. पहले इन्होंने एक उदय चलाया था, आपने सुना होगा, और उससे ज्यादा फर्क नहीं था. इसमें प्रॉब्लम ये था कि आपको जब आप कमिट करते हो ना, कमिट करने पे ही पैसा मिल जाता. ओके. राइट. तो सब लोग करेंगे. आप बोलना क्या है, आई के माय एज अ चाइल्ड वी हैव टोल्ड आवर पेरेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे 4 घंटा एवरी डे, कुछ पॉकेट, उसमें क्या है, आई कैन से 8 hours also and I can pretend to do it for 2 weeks, right? But इसमें RDSS में ऐसा नहीं है. It's not on commitment, it's on delivery. Okay. There are milestones. One of the milestone is आपको सरकारी डिपार्टमेंट्स में स्मार्ट मीटर इतना you have to install, right? Your power tariffs you have to revise. ये करने के बाद, so that is a big difference. इसलिए I am hopeful that some state governments who can see through the long-term political benefits, because ultimately 24-hour power also is politically beneficial, right? ऐसा नहीं कि free power is only political. Right. 24/7 अगर power मिल जाए, इंडस्ट्री आ जाए, the problem, see, good economic policies का एक ही प्रॉब्लम है मनदीप जी, एक ही प्रॉब्लम ये है कि टाइम लगता है, इफेक्ट दिखने में टाइम लगता है. अगर आपका पॉलिटिकल कैपिटल है, if you are sure that you are going to survive for next 10 years, even if there are some issues, then such people will be able to implement this. But if you are only thinking about next election, then initially problem होगा. Yes. So I'm a bit worried, कि क्या होगा, if अभी तो नेक्स्ट 6 महीने तो नहीं होगा, इलेक्शन सीजन तो आ गया ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ आई डोंट थिंक लॉट विल हैपन. उसके बाद देखना पड़ेगा 24 के बाद. बट प्रॉब्लम ये है कि 24 अप्रैल होते ही महाराष्ट्र इलेक्शन आ जाएगा, वो होते ही झारखंड का आएगा. दिस इज नेवर एंडिंग साइकिल. दैट्स अ सैड पार्ट. राइट. देखो, एक चीज क्लियर है, हमारा केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ रहा है. मतलब बड़े बड़े आलीशान प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं. साथ में बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं. पॉलिटिकल विल चाहिए, करप्शन केसेस हो सकते हैं, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम हो सकती है. मेरे घर की जो गली है ना, वहां पर किसी का एक खेत आ रहा है बीच में, वो अड़ गया, उसने स्टे ले लिया कि मैं तो नहीं बनाने दूंगा रोड. खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी. बट इन जनरल फॉर बिजनेसेस टू ग्रो एंड फ्लरिश, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बिजनेस ग्रो करेगा तो उसके इन्वेस्टर भी ग्रो करेंगे. बट हम ठहरे रिटेल इन्वेस्टर. आप डायरेक्टली पावर, सीमेंट, स्टील, इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. बट सिर्फ इतनी नॉलेज से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्टर और कंपनी एनालिसिस तो अभी बाकी है. मे बी एन ईजियर वे टू पार्टिसिपेट इन दिस इज वाया इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड्स. बट क्योंकि ये भी एक थीमेटिक फंड है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 2 दिन में तो कंप्लीट हो नहीं सकती, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो कॉल लगाओ अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, उसके साथ डिस्कस करो. और जैसे भारत की सरकार अपने जीडीपी का 3.5% इन्वेस्ट करती है, आप देखो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. इस पॉडकास्ट से हमारा ऑब्जेक्टिव था आपके माइंड को किक स्टार्ट करना, ताकि आप समझ पाओ कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे काम करती है. आप बजट को देखकर एनालाइज कर पाओ कि ये बजट अच्छा है या बुरा है, पैसा अच्छी स्कीम्स में जा रहा है या बुरी स्कीम्स में जा रहा है. आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा. मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में. तब तक के लिए स्टे जागरूक. बाय बाय.